Hello students, good morning. Welcome to our YouTube channel Commerce Canpit Odisha. So पिलाने आमे कंपनी अकाउंट क्लास करथुले जो थे कि आमे किछटा प्रॉब्लम करथुले आज आमे आउ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम करिया प्रैक्टिस करिया ठीक अछि। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आज रो क्वेश्चन नंबर 1 ओके। Sky Rockets Limited made an issue of 1 lakh equity shares of 10 each. Payable rupees 2.50 on application, 3.50 on allotment, rupees 4 on final. All the sales subscribed and amount due received pass journal entry to give effect to this. Also show relevant items in the balance sheet. So total 10 rupees through application 2.50, allotment 3.50, 6 है 4 होची फाइनल कर 10 हेला। तो हमको एडी जर्नल एंट्रीज को बैलेंस शीट भी करार अछि पिला जर्नल एंट्रीज को कोन करार अछि गोटे बैलेंस शीट भी करार अछि ठीक अछि। देखो आमे डेट पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट ओके तो मैं पूरा परफेक्ट फॉर्मेट आनिलाने डेट तो पिला ने एथरा हमको के देनी डेट बदला में सीरियल नंबर को क्या तो सीरियल नंबर 1 तो फर्स्ट पिला ना एप्लीकेशन मन रिसीव करे कोन करिया बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी से एप्लीकेशन बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी से एप्लीकेशन कितना से कुछ की स्काई रॉकेट लिमिटेड मेड एन इश्यू ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 each ता माने 1 लाख शेयर इनटू रुपीस 10 लेके तो केते ला 10 लाख narration लिखियो being equity share application money received being equity share application money received second equity share application to equity share capital 10 lakh sorry मु into 10 कौन कली रे into 2.5 now application 2.5 application 2.5 ता माने 2.5 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख 2.5 lakh being share application money transfer to share capital being share application money transfer to share capital ठीक अछि। application तो सरला एबे allotment करिया equity share allotment account debited to equity share capital being equity share allotment money due केते लिखे पिला ने 1 लाख शेयर into 3.5 ता माने 3.5 लाख 3.5 लाख 4 बैंक अकाउंट डेबिटेड to equity share allotment being equity share allotment money received केते 3.5 लाख 3.5 लाख next 5 equity share final call account debited to equity share capital being equity share final call money due केते रे 1 लाख into 4 लिखे 4 लाख last बैंक अकाउंट डेबिटेड to equity share final call 4 लाख being equity share final call money received ठीक अछि पिलाने। तो एबे हमर 6 टा जाक एंट्री हे होला फर्स्ट कोन होला एप्लीकेशन मनी रिसीव होला तापर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल allotment money due allotment money receive final call money due final call money receive तापर से गोटे बैलेंस शीट करिया पई कहिस पिलाने क्वेश्चन देखो also show the relevant item in the balance sheet गोटे बैलेंस शीट करियो छौची कहिची बैलेंस शीट पिलाने कंपनी रो बैलेंस शीट के अलगा टाइप देखो पिलाने कंपनी रो बैलेंस शीट केमती एटा मोडे
छोट फॉर्मेट करछि एटी कंपनी रो बैलेंस शीट रो फॉर्मेट एटा होछि बैलेंस शीट रो फॉर्मेट मु जेति रेड रे ड्रॉ करली सेति होछि बैलेंस शीट रो फॉर्मेट ठीक अछि तो पर्टिकुलर अमाउंट कंपनी रो बैलेंस शीट पिला माने ए टाइप रो वर्टिकल हुए प्रथम लिखिबो इक्विटी एंड लायबिलिटी इक्विटी एंड लायबिलिटी कौन मैंने पिलाने लायबिलिटी से कौन थाउची इक्विटी लायबिलिटी दीटा थाउची इक्विटी एंड लायबिलिटी रे प्रथम लिखिबो इक्विटी हला बा इक्विटी तुम न लिखि कि एडी शेयर होल्डर्स फंड लिखले भी चलिबो शेयर होल्डर्स फंड शेयर होल्डर्स फंड लिखिबो इक्विटी शेयर कैपिटल कौन लिखिबो 1 लाख शेयर्स एट द रेट रुपीस 10 ईच करी अमाउंट पको 10 लाख ता माने हमरो टोटल लायबिलिटी रे केते अछि लायबिलिटी तो किछ नै केवल इक्विटी अछि बा इक्विटी शेयर होल्डर फंड जेटा कि इक्विटी शेयर कैपिटल लक्षेटा शेयर 10 टका लेके 10 लाख तो टोटल हमरो लायबिलिटी साइड एति पिला नै 10 लाख हे गेला एबे दबो असेट्स रे पिला माने हेडिंग दबो करंट एसेट्स रे लिखिबो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट केते केस अछि हम पारे 10 लाख अछि टोटल एसेट भी 10 लाख कोन में 10 लाख आमे 10 लाख टंका शेयर इश्यू करले ता बदले 10 लाख टंका पाइले पिला माने तो तमे जेतलो भी शेयर इश्यू ऑफ शेयर रे बा कंपनी अकाउंट गोटे बैलेंस शीट करबा चाहूची तो तमे एसेट साइड रे केवल एति देखियो एसेट करंट एसेट्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 10 लाख हमरो कैश अछि जहां में कैश रिसीव करछे सेति के देखिबा जदि किछि कॉल इन एरियर थिबो माने हम पैसा मिल नथिबो ताले टोटल हमें जति की ड्यू करछे सेतिरु माइनस करबा जिंदगी हमें 10 लाख टंका कैपिटल इश्यू करथिले मनगर 50 टका एरियर थांदा ता 9 लाख 50 पड़थांदा एडी भी ठीक सिंधी जति टंकार हमें कोन करछे शेयर इश्यू करछे सेति टंका एडी पड़िबो ठीक अछि तापरे क्वेश्चन नंबर 2 a company was floating with an authorized capital consisting of 20,000 9% preference shares of 100 each payable 25 per share on application 25 per share on allotment 50 per share on first and final call ता माने पिले माने प्रेफरेंस शेयर हम इश्यू करले केतटा 20000 टा शेयर इश्यू करले 9% प्रेफरेंस शेयर माने प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड 9% पिला माने तो हमरो 9% टा हमरो 80 किछि मतलब नाही डिविडेंड देला टाइम रे 9% डिविडेंड दबा तो हमें 100 टंका लेके गोटे प्रेफरेंस शेयर जोथरे कि एप्लीकेशन में मागे जे 25 अलॉटमेंट मागे जे 25 आउ गोटे ही कॉल 50 रुपीस मागे छे ता सहित 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच 3 लाख टा इक्विटी शेयर भी इश्यू करले पेबल 2.50 on application 2.50 on allotment rupees 5 per share on final call तो पिला ने इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दिया को मिसी के इश्यू कर जाय क्वेश्चन रे application were received for whole of the preference and equity shares सब जा पे application आसिला all the money due on the shares was paid with the exception of the amount due on the first and final call of 4000 equity shares ता माने पिला माने हमें जहां भी पैसा ड्यू करिचे जहां भी पैसा मागिचे सब जा पैसा मिल जाईची केवल 4000 टा शेयर रे फाइनल कॉल पैसा मिलिनी make necessary entries and balance sheet of the company तो हम कोन करे पड़िबो जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट दिया करे पड़िबो तो पिला ने जर्नल एंट्री करबा डेट पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर मिसे करिया पिला ने ठीक अछि नंबर 1 कोन करबा फर्स्ट रे बैंक अकाउंट debited to equity share application बैंक अकाउंट debited to equity share application 3 लाख टा एप्लीकेशन रे 2.5 लाख पिला ठीक अछि 3 लाख टा इक्विटी शेयर इश्यू करछे 3 लाख into 2.5 वाला केता आछि 7.5 लाख 7.5 लाख टिके अमाउंट के चेक कर दो
being equity share application money received, being equity share application money received. तापर preference share भी कर दबा, bank account debited to preference share application केते पिला ने 20,000 shares into 25 लेखे तो केते 50,000 ना 5 lakhs 5 lakhs 5 lakhs 5 lakhs. Okay, being preference share application money received. तो आमे एक नंबर एंट्री रे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव करले, दुई नंबर एंट्री रे प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव करले. एबे तीन नंबर रे पैसा पाया. तो पैसा पाइले ट्रांसफर करिया. ट्रांसफर करले केमती करबा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, being equity share application money transfer to equity share capital केते 7.5 lakh 7.5 lakh. तापर कोन करिया, प्रेफरेंस शेयर को ट्रांसफर करिबा, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन रो पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल को गला, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन रो पैसा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को गला 5 लाख 5 लाख. ता माने एप्लीकेशन कथा सरला. एबे अलॉटमेंट मनी ड्यू करिया. इक्विटी शेयर allotment account debited to equity share capital केते पैसा मिले पिला ने अगेन 2.50 3 lakh into 2.5 is equal to 7.5 lakh 7.5 lakh. ठीक अछि. तापर पिला ने हमें कोन करबा, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट ड्यू करबा. प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. प्रेफरेंस शेयर केतेरा 40 टा प्रेफरेंस शेयर केते लेखे 25 लेखे 5 लाख 5 लाख. being preference share allotment money due. एबे पिला ने 7 नंबर एंट्री रे कोन करिबा, इक्विटी शेयर allotment money रिसीव करिबा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर allotment. पूरा पैसा 7.5 लाख एंड जेती मागितले सेती पाइले. ठीक अछि. तापर 8 रे पाइबा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट रो पैसा पाया पिला ने. बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट केते प्रेफरेंस शेयर पे मागितले 5 लाख. क्लियर. तापर कोन करे पिला ने, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 9 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल. फाइनल कॉल केते पिला ने 3 लाख into 5 लेखे 15 लाख. being equity share final call money due. Next, preference share final call account debited to preference share capital केतटा 20,000 into 50 is equal to 10 lakh. being preference share final call money due. एबे पैसा रिसीव करिया. एंट्री नंबर 11, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल. being equity share final call money received. एडी प्लान अछि हमर कॉल इन एरियर अछि टू कॉल इन एरियर. तो पिला ने सॉरी कॉल इन एरियर तो डेबिट हुए सब बोले.
बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल मागची पिलाने 10 लाख पैसा केतरा शेयर मिलनी 4000 शेयर मिलनी 5 टका लेखे 4000 इंटू 5 केते 20000 बाकी मिलिथिबो केते 3 लाख रु 4000 गले 2 लाख 96,000 शेयर रे पैसा मिलथिबो इंटू 5 टका लेखे केते 9 लाख 80,000। क्वेश्चन टी देखिदा कंफर्मेशन पाई। तो पिला से कहिछि ना due on the first and final call on 4,000 equity shares, तामने से कहला all the money due on the shares was paid with the exception of amount due on the first and final call on 4,000 equity share। 4,000 equity share रे फाइनल कॉल मनी मिलनी जोटा कि 3 टका लेके फाइनल कॉल रे सॉरी फाइनल कॉल केतना ले मागे इक्विटी शेयर रे 5 रुपीस लेके फाइनल कॉल केते मागे 5 रुपीस लेके। ओके तामने 5 into 4 20,000 मिलनी। आ गोटे एंट्री पिला ने मु एठी कर दोछि टिके जगह अछि। नंबर 12 बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल, टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल। ओके तो केते पिला ना हम ड्यू करथले 10 लाख ड्यू करथले 10 लाख पूरा मिलिबो 10 लाख 10 लाख। या से तो पिला तुम जर्नल एंट्री सरला, या से तुम जर्नल एंट्री सरला। तो एई क्वेश्चन रे तुमरो कोन एक्स्ट्रा जिनिस देथिला पिला ने इक्विटी शेयर आ प्रेफरेंस शेयर मिसेई दे देथिला। ठीक अछि तो इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर मिसेई के हम एंट्री कलो अलग अलग ही कर दो पिला ने आर एप्लीकेशन तार एप्लीकेशन अलगा तापर एप्लीकेशन ट्रांसफर आर अलगा तार अलगा अलॉटमेंट माने ड्यू आर अलगा तार अलगा इन सब जगह अलग अलग करी कर दबा किछि डिफिकल्टी नाही खाली इक्विटी बदले प्रेफरेंस लिखिया होता बाकी सब समान। एबे हम गोटे बैलेंस शीट करे ओली कहले कोन कहले पिला ने गोटे बैलेंस शीट करे ओली कहले देखो गोटे बैलेंस शीट करिया ने particular amount equity and liability तो इक्विटी एंड लायबिलिटी हम लिखिया शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड से लिखिया इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल केते पिला ने ना आमे 3 लाख शेयर इश्यू करचे एट द रेट केते लिखे 10 लिखे तो इज इक्वल टू 30 लाख एडी का कर दो माइनस कॉल इन एरियर 12,000 तो करी कि अमाउंट कॉलम केते करियो 30 लाख रु 12,000 ना हां ना 20,000 कॉल इन एरियर 20,000 ता माने एडी केते रहला 29.8 लाख। ठीक अछि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल केतरा रे 20,000 एट द रेट 100 each 20 लाख ता माने टोटल मिसिंग हमर केते होची 49.8 लाख। तापर हेडिंग दबा असेट्स एसेट्स रे कोन हेडिंग दबो करंट एसेट्स ओके तो करंट एसेट्स रे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट केते पैसा रिसीव करछे 49.8 लाख हमें रिसीव करिछे तो आर भी टोटल 49.8 लाख आर भी टोटल 49.8 लाख। क्लियर एटा होची बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2024। ओके बुझले पिला ना बैलेंस शीट करियार कॉल इन एरियर पैसाटा एक्चुअली माइनस करी पक्का जाए कोन पाए ना कॉल इन पैसाटा हमको मिलिनी। ठीक अछि तापर करिया क्वेश्चन नंबर 3
क्वेश्चन नंबर 3 देखो पिलाने क्वेश्चन नंबर 3 रे कोन देछि Fine Limited acquired land costing 1 lakh and in payment allot 1000 equity shares of 100 each fully paid off. तार माने कौन होची फाइन लिमिटेड गोटे कौन किनला लैंड किनला लक्षे टार ताकू पैसा देला बदल रे माने जाठू लैंड किनिला सेलर को कैश दबा बदल रे ताकू 1000 इक्विटी शेयर देला 100 लेखे ठीक अछि Further, the company issued 4000 equity share to the public. तापरे से 1000 शेयर का देदेला लैंड सेलर को देदेला तापरे 4000 शेयर से पब्लिक को इश्यू करला द शेयर्स वेर पेएबल एज फॉलो on application rupees 30 allotment rupees 30 first and final call rupees 40 30 30 40 से मांगिले the public the public applied for all the shares which were allotted. All money were received except the call of 200 shares. Give the journal entry and balance sheet on that company. तो सब से पे ना बैलेंस शीट मांगुची तो बैलेंस शीट करिया भलसे शिक्षा दरकार डेट पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट ओके तो पिला फास्ट हमर जर्नल नंबर 1 रे हमें कोन करले पिला ने हमें लैंड किनले कितना लैंड किनले लक्षे टा लैंड किनले ता बदल ताको कैश न देकी देले कोन शेयर कैपिटल ता माने फर्स्ट हमर हबो लैंड अकाउंट डेबिटेड हम पाउ लैंड आसेला सेटा लैंड अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल ताको पैसा न देकी लैंड किनले कोन माने लैंड अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट होबा कथा किंतु हमें एटी ताको पैसा देने इक्विटी शेयर देइछे सेट में लैंड अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल केते पिला ने 1 लाख दे देइछे से ठीक अच्छे से 1 लाख दे देछि तो एटी भी देखो से इन भी कहछि 1000 टा शेयर देला 100 टका लेखे सही 1 लाख आछि being land purchased and equity share capital issued to the seller ठीक अच्छे नले इन लिखियो being land purchased and issued equity share for the consideration of land इन भी लिख परियो ताका तो सरला एबे नंबर 2 बैंक अकाउंट डेबिटेड हम चिंत करथुले बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन बीइंग एप्लीकेशन माने रिसीव्ड केते पिला 4000 टा शेयर इश्यू करले इनटू 4000 टा शेयर केते लेके मागी जे 30 40 माने केते 12% नहीं 1,20,000 1,20,000 being equity share application money received being equity share application money received तापर ट्रांसफर करिया पिला ने इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,20,000 1,20,000 being equity share application money transfer to equity share capital 4 रे कोन करिया allotment money ड्यू करिबा equity share allotment account debited to equity share capital equity share allotment account debited to equity share capital being equity share allotment money due केते सेम 4000 शेयर रे 30 लेखे 1,20,000 1,20,000 ओके तापर पैसा मिलिबो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर allotment 1,20,000 being equity share allotment money received तापर हमें कौन करिबा फाइनल कॉल ड्यू करिबा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल केते पिला ने 4000 शेयर रे 40 लेखे 1,60,000 being equity share final call money due
being equity share final call money due. 7 number, bank account debited, call in area account debited to equity share final call. तो फाइनल कॉल रे मागी थी पिला ने 1,60,000 कॉल इन एरियर केतरा अछि देखिए क्वेश्चन को जाई कि से को जे ऑल मनी वे रिसीव्ड एक्सेप्ट द कॉल ऑन 200 शेयर 200 शेयर रे पैसा हमु मिलनी पिला ने ता माने कॉल इन एरियर केते अछि 200 * 40 8000 अब पैसा एते मिलथिबो 4200 गले 3800 * 40 ता माने 1,52,000 being equity share final money received, being equity share final money received. ओके एबे पिला ने गोटे बैलेंस शीट कर दबा बैलेंस शीट is on 31st March 2020 2024 पर्टिकुलर अमाउंट तो फास्ट में कौन लिखले पिलाने इक्विटी एंड लायबिलिटीज इक्विटी एंड लायबिलिटीज सेथरे लिखुतले शेयर होल्डर्स फंड सेथरे हम लिखिबा इक्विटी शेयर कैपिटल इतना शेयर पिलाने टोटल हमें कितना इश्यू करते 5000 टा इश्यू करछे 5000 एट द रेट ₹100 ता माने केते होची 5 लाख होची 5 लाख माइनस कॉल इन एरियर केते अछि कॉल इन एरियर अछि 8000 ता माने टोटल हमर इक्विटी शेयर कैपिटल केते हला 4,92,000 टोटल कर दियो 4,92,000 तापर एसेट पके एसेट्स हेडिंग दबा करंट एसेट्स ना फिक्स एसेट्स भी चाहिए रे फिक्स्ड एसेट्स बैक फिक्स एसेट्स को हमें नॉन करंट एसेट्स बोली कोचे पिला ने बैलेंस शीट नॉन करंट एसेट्स लिखा जाए नॉन करंट एसेट्स रे हम लिखिबा टेंजिबल एसेट हला सेथरे लिखिबा बिल्डिंग बा बिल्डिंग न लिखि ब्रैकेट रे बिल्डिंग लिखि देले भी चलिबो टेंजिबल एसेट बिल्डिंग केते अछि बिल्डिंग हमरो 1 लाख रो तापर हेडिंग दबा करंट एसेट्स ठीक अछि करंट एसेट्स रे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट केते पिला ने 3,92,000 तो टोटल केते 4,92,000 देखो पिला ने हैला क्लियर तो आज कौन शिखिले पिलाने बैलेंस शीट करिया शिखिले ता सहित आमे इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दीटा गुथर मिसई कले केमते होची शिखिले नेक्स्ट क्लास रे और अधिक प्रॉब्लम करिया पिलाने आज रो क्लास एतिक थाउ थैंक यू वेरी मच।